Hello and welcome to a very special show, Salute Our Protectors, on the NDTV Detol Banega Swasth India campaign. We are showcasing stories of protectors, warriors, heroes who have really come forward to do their bit and help many people during the second wave of the pandemic. Mumbai's Dattare Sawant has been selflessly ferrying COVID as well as non-COVID patients to hospitals and COVID centres, and he's not charging a single penny for it. He's a school teacher by profession, but he rides the auto rickshaw as part-time work, and it's definitely making a huge difference. मेरा नाम दत्तात्रेय सावंत। मैं ज्ञान सागर विद्या मंदिर घाटकोपर वेस्ट में 8, 9, 10th स्टैंडर्ड को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं 15 साल से ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। इसका मेन ये कि मेरा स्कूल है, 20% पेमेंट मिलता है। उस पेमेंट से मेरा परिवार का खर्च मैं नहीं निभा पाता, इसलिए मॉर्निंग में 7 बजे से 12:30 बजे तक स्कूल में, बाद में आकर 2 घंटा आराम करके फिर ऑटो चलाता हूँ आफ्टरनून में। फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, तब मैंने सोचा भी क्या करूं, तो मैंने सोचा भी स्कूल भी सब ऑनलाइन भी बंद है, ऑफलाइन भी बंद है, तो मेरा वो जो रोजी रोटी का जो ऑटो चलना काम था मैंने शुरू किया। फिर सोचा कि ऐसा एक हादसा हो गया कि 1 साल पहले मेरे माँ की उम्र की एक औरत मेरे पास आ गई रात 3 बजे करीबन 2-3 बजे के पास, और वो बीमार थी। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अस्पताल छोड़ेंगे क्या। उन्होंने 3-4 ऑटो वालों से पूछा था, वो ना बोले। मैं बोला ठीक है मैं छोड़ता हूँ। तब मेरे मन में ख्याल है कि उस औरत की जब मेरी माँ होती या मैं होता तो क्या होता। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे ऑटो के माध्यम से क्यों नहीं लोगों की सेवा कर सकूँ। इसलिए मैंने 15 अप्रैल से कोविड पेशेंट को लेना शुरू कर दिया। निकल जैसे मेरे पास सब ऑक्सीमीटर है, टेम्परेचर गन है, एक किट है, 2 टाइप के सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर गाड़ी सैनिटाइज करने के लिए, तो अलग तरीके का सैनिटाइजर है, केमिकल है। इस तरीके सब फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट मेरे पास है, इसलिए मैं अच्छी तरह निकलता हूँ। और आप बोल रहे कि डरने की क्या बात है। अभी अस्पताल में जो इसेंशियल सर्विस वाले जो डॉक्टर है, नर्सेस है, वो सब 24 आवर्स उन पेशेंट के साथ कनेक्ट होते। उन्होंने ऐसा सोचा तो हमारे देश में क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो, पहले से मैंने मन से डर निकाल दिया। मैं जिस एरिया में रहता हूँ स्लम एरिया में, वहाँ एम्बुलेंस आने के लिए बहुत तकलीफ होती है, यानी स्लम एरिया में समय पे नहीं आती है तो यानी उनका जो रेंट है ज़्यादा बढ़ा देते, पेमेंट ज़्यादा बढ़ा देते। ये स्लम लोगों के, स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को परवड़ता नहीं। देखो, मैंने जो सेवा शुरू किया सुबह 7 बजे से रात यानी 12, 1, 2 कभी भी जब कॉल आता है पेशेंट का, तब मैं सोचता नहीं कि अभी 2 बजे 3 बजे कैसे जाऊँ। मैंने जो सेवा किया है खास करके पेशेंट के लिए सेवा शुरू की, इसलिए मुझे मेरे परवाह नहीं, लेकिन पेशेंट को सही समय पे अस्पताल पहुंचाना है मेरा फर्ज है। अब भगवान के या मंदिर में जाने से मुझे अच्छा है कि लोग मंदिर में जाते हैं, फूलमाला चढ़ते, उससे अच्छा है। एक काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो मरीजों को अस्पताल तक लेके जाओ और अस्पताल से घर लेके आओ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि मेरी वजह से कोई ना कोई जो मरीज उनको समय सही टाइम पे उनको इलाज हो जाए, वो अच्छी तरह से हो जाए, ये मेरे लिए आशीर्वाद है। Amid shortage of oxygen, swamped hospitals, there are people like Commodore Rajiv Sardana and his wife Archana who decided to convert their car into a small oxygen tanker which carries 3 jumbo cylinders. Let's watch how this couple has been helping across the capital. I'm Commander Rajiv Sardana, retired from the Indian Navy, served in the submarine arm. I remodeled the Maruti Omni van myself, and we filled in 3 jumbo cylinders and carried close to 20 small cylinders.
The situation so demanded that was so bad in Delhi, and we could see friends and family members, so desperately looking out for oxygen. यहाँ मेरी एयर कंडीशन की दुकान है रमेश नगर में, और यहाँ मैंने क्राइसिस देख के इसी साल से मैंने और मेरे कज़न ब्रदर ने और कमांडर साहब ने मिलकर डिसाइड किया कि ये ऑक्सीजन का बहुत क्राइसिस है, तो ये काम शुरू करना चाहिए, सेवा शुरू करनी चाहिए सबके लिए. And the idea for free oxygen for India was because of the people taking others for a ride, ripping off people. That is the reason we said we'll procure and hand it over free. मेरे को कमांडर सर ने व्हाट्सएप भेजा था, को मैंने उनको कॉल किया कि सर मैं भी इन हूँ इसमें भैया, तो फिर उन्होंने ठीक है तू भी साथ में आ जा, तो फिर मैंने भी उनके साथ शुरू किया. मेरा काम ये रहता है कि सिलेंडर पिक करना होता है यहाँ से या कमांडर सर के यहाँ से, और दे के आना होता है, जो नीडी होता है उनके यहाँ घर तक पहुँचा के आता है. So somebody had to take care of the people and we did our best 24/7. Now we have taken up new procurement, which is all American cylinders, the premium stuff in the market. That too because we are getting the queries. Some people want के black वाला handle नहीं होता, they are not too comfortable as a cylinders, and we also had our issues and problems where leakages were there. So we thought of why not have the high-tech equipment. So we have the high-tech equipment as on now. I did feel overwhelmed at one time because I was getting close to 150 calls a day and night. रात को 2 बजे भी अगर कोई हमें फ़ोन करता है तो हम उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन उनको उनके घर में भी डिलीवर कर देते हैं, और कोई हमारे पास भी आता है तो उन्हें भी हम भर के अपने यहाँ से दे देते हैं. मदद करने में जो है दिल से अंदर से ही वाकई में खुशी होती है, लोगों की मदद करते हैं कि भाई हम भी किसी के लायक कुछ करने लायक हैं. सेवा में लग गया रात दिन में, जब भी ये कहते हैं मैं स्कूटर पे सप्लाई करके आता हूँ सिलेंडर. My only request to all Indians is don't be lax. Buy a oxygen cylinder and keep it. It's your fire extinguisher and a life jacket rolled into one. So you like it or you don't, you need to have it. After working as a frontline worker in New York during the first wave of the pandemic, Dr. Hanmandeep Singh Boparai returned to his hometown Amritsar to help with the increasing number of cases of COVID-19. He started with imparting training to nurses and doctors on the COVID protocol. Presently, the 34-year-old doctor is working in Mumbai with Doctors Without Borders. There's a sign here that says, "Imagine a world without COVID." I do want to imagine one. I was in New York during the first wave of the pandemic when it hit the United States, after being in Italy and before that in China. When I came back to India in April, my intention was to use the lessons that we had learned abroad in order to start building capacity and helping out both the healthcare professionals here as well as the infrastructure. The cases started rising very rapidly, so I decided to stay on and defer all my other commitments because we needed all hands on deck. After that, I went to Mumbai with an international humanitarian aid organization called Doctors Without Borders and spent about three weeks with them at this 1,000-bed COVID hospital in Mumbai, where we assisted both in the wards with our team, but also with our team we're able to train nearly 300 or more doctors and nurses in some ways to emergently see COVID patients. The healthcare infrastructure in the United States is definitely much more advanced, but we were still caught unawares to some extent when the first wave came to New York after being in China and then Europe and Italy. Our system was overwhelmed by the number of patients, but we still had enough doctors and nurses. We still had a manageable caseload.
In India, what we've seen is that our existing infrastructure has been massively overwhelmed just because of the number of cases we've seen. With that, our supply chains, our oxygen supplies, everything has been stressed. The differences also are that I've seen the people have gone above and beyond here. The doctors, nurses, techs, anyone who's worked in the hospitals here, anyone who's worked outside the hospitals in helping tackle this wave, even the civilians have gone out of their way to help each other and to help people out, which is really encouraging. Now that the cases are lower, I think it is time that we take stock of the situation and we continue to build our capacity. We continue to train and rest wherever it is possible. The major learnings are that even with limited facilities and limited infrastructure, we can still help a great number of people if we can make sure that we have efficient use of that infrastructure as well as enough support for the people who are working. Now this has been nearly a year or more of the pandemic, so there is a fatigue that has set in with people. So supporting those healthcare professionals, supporting our people who are on the front line in other professions, in giving them mental health breaks, but as well as training where it is necessary, is now going to be very important to tackle anything that is coming in the future. And this is with collaboration with other people. One of my intentions in staying here is to continue to help fill any of these gaps that are necessary. Throughout the COVID-19 pandemic, Dr. Marcus has been providing medical consultations, spreading awareness on COVID protocol, precautions, as well as mental health through social media. But then he took a step forward, another step, and that was on May 1st when, along with his wife, Dr. Raina, he started an initiative, Medformore, wherein they collect unused and unexpired medicines from recovered COVID patients, and then they distribute it in rural India. What Medformore essentially is doing is we collect unused, unexpired medicines from people who've gone through COVID-19 themselves, have got that medicine lying at home, and we just ask them to donate it to us. And then we as a platform now have created this platform that links those two parties together and makes it available free of cost for people who don't have access or who can't afford the medicines. So I really got to thank my wife for that explosion, because she immediately mobilized folks that live around us in our local area, and within a day or so we had already got 10 or 12 buildings within our immediate locality to say, yes, we want to also be doing this with you. It was a very simple, small idea. Even we weren't prepared for how big it would get. But I think what this has taught us is never underestimate what one simple step or one simple act of kindness can do. We very often fear doing something because we feel that, oh, people will not, contribute to this cause, or people will not come forward. I think what this has taught all of us is how willing people are, how helpful people can be given the right situation and the right amount of motivation to do something. And so we set up these very small cartons and boxes in the different buildings, and people just started to donate medicines. We would drive around, pick it up, and then send it off to the NGOs. With Medformore, the thing is that because we're collecting medicines, it has to be dispensed in a very proper manner by a medical professional. So we can't just go out on the streets and be giving medicines to people who need them. So that's another thing that we've had to think through a lot and do it in a very structured manner, and make sure that we tied up with the NGOs who had the right licenses to dispense these medicines, and that these medicines were ultimately going to either primary health centers or to hospitals where they had doctors who were able to dispense these medicines.
We have thousands of volunteers now in 8 cities across the country. In Mumbai alone, this city, we've collected in excess of 250 kilograms of medicines. That will be even more when we start counting what is existing in the other cities as well. We're working with some of the largest NGOs around the country. Collectively, their reach to small villages and rural healthcare centers, and even within cities now, COVID centers, jumbo centers and primary healthcare clinics, all making sure that this is completely provided free of cost. And what I'm most proud of is that there hasn't been a single rupee which was transacted anywhere. It's just down to volunteers, and it's just down to the goodwill of all the partners involved. And we have learned so much through this whole thing. So yeah, what I would like to tell people is do whatever you can to help your neighbor, to help the person next to you, because you never know what kind of impact it can have on that person's life. And now the story from Jaipur. When the pandemic swept across the city, families were doing rounds of hospitals. There was more than one person COVID positive in the family. It was very difficult to prepare food because getting groceries and vegetables was a challenge. That's when Ashu Singh Surpura and his team stepped in. They started cooking in community kitchens, packing and delivering food outside hospitals twice a day. हमने एक बीड़ा उठाया था कि जयपुर राजधानी है और पूरे राजस्थान से यहाँ पे लोग आते हैं, तो अभी लॉकडाउन में होटलें वगैरह सब बंद थी, तो हमने ये निर्णय किया कि हम उन परिजनों तक जो मरीजों के साथ आ रहे हैं, मरीजों को तो भोजन मिल जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन परिजनों को खाना नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हमने लगभग 5,500-6 हज़ार लोगों को प्रतिदिन भोजन पैक करवा के 4 चपाती सब्जी थाली जो एक पैकिंग करवाई हमने, उसको हमने जो बड़े हॉस्पिटल हैं, सवाई मान सिंह हॉस्पिटल है, जेके लोन हॉस्पिटल है, महावीर कैंसर है, RUHS जो कोविड का सबसे बड़ा अस्पताल निर्धारित किया था, उसमें वहाँ सुबह शाम दोनों वक्त हमने उन परिजनों के लिए भोजन, आज भी जारी है, लगातार चल रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ था ये जो समस्या उत्पन्न हुई, मैंने काम करते वक्त किसी की जाति नहीं पूछी, किसी की पाति नहीं पूछी, किसी की पार्टी नहीं पूछी। मेरे पास जो भी आया मैंने पूरी संभव हर संभव उसकी मदद करने की कोशिश की। और इस कार्य का जो सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि पूरा श्रेय जो देना चाहूँगा वो मेरी टीम को है। पिछले लॉकडाउन में हमने 5,000 लोगों को खाना बांटा है और इस लॉकडाउन में अभी 1,000 लोगों को खाना चल रहा है, प्लस कोविड वालों को भी हम घर घर खाना पहुँचा रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने कोविड क्वारंटाइन कर रखा है उन लोगों को भी हम खाना घर में पहुँचा रहे हैं। और बाकी SMS, जेके लोन और ट्रॉमा तीनों में बराबर खाना बट रहा है, सुबह और शाम करीब 1,000 लोगों का खाना डेली बच रहा है। और हमने लगभग अभी तक 100 परिवार चिन्हित कर लिए पूरे क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में से जो 100 परिवार हैं उनमें से हमने 8-10 परिवारों तक हमारी पहुंच हो गई है, और ये लगातार रोजाना हम एक परिवार तक पहुंच रहे हैं। शहर मधुवर्मा, गांव प्रतापपुरा जोगने का रहने वाला हूँ। मेरी 17 महीने पहले रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिससे मेरे पैरालिसिस हो गया, जिससे लॉकडाउन की वजह से मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। और इस खबर का समाचार भाई आशु सिंह जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने तत्काल मेरे को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता और हर महीने के लिए पेंशन के 1,000 रुपये देने की घोषणा की और राशन सामग्री पहुंचाई। आशा करूंगा कि इसी प्रकार हमें भगवान ने मौका दिया है, माध्यम बना के भेजा है, तो हमें इस काबिल बना के रखे कि हम इस जनता की सेवा हर विकट परिस्थिति में करते रहें। As we as a nation have battled the second wave of the COVID-19 pandemic, we've seen how India has come together. Heroes, protectors who have emerged as saviors. We only could show you some stories, but there are so many who have emerged, saved thousands of lives. We salute their compassion and courage.